Victor Tango Sierra November Juliet, Mumbai ground, readability check. How do you read? Read you 5. How do you read? Sierra November Juliet. Victor Tango Sierra November Juliet, Mumbai ground, read you 2. How do you read? Read you 5. Victor Tango Sierra November Juliet. How do you read? Always remember your call should end with your call sign. Here it didn't end with your call sign. So think and speak. That's all you have to do to maintain accuracy. You'll just be a little aware about the basic rules, then probably you'll be able to like differentiate between idle replies. Yeah. So yeah. So we'll imagine that you were waiting in the waiting room of the exam. So that's what you're doing now. We have called out your name. So we will simply start your part one practice. Are you up for it? Do you have any doubts to discuss? I have couple of doubts. Let's discuss them. Okay. Just a second, okay? Yes, sir. Tell me. Just focus on the voice. Yes. So I want to know Let's discuss them. when you see an aircraft switching on and off the landing lights on takeoff leg. I mean, you are at runway holding point and you see this aircraft Mm-hmm. at finals. So that is a pan call. Okay. Correct? Are you talking about the paper that Meet had given? No, I was just going through my notes. Okay. So I just wanted to cross-check this thing again. Hmm. Discuss the situation. Tell me, Okay. what are you talking about? Who's at the holding point? Stand by. Okay. You are at runway holding point Mm-hmm. and you see aircraft on finals switching on and off landing lights. So that is a pan call, right? See, when you are on base leg, okay? Sorry, you are at runway holding point. It means you will be the next person to enter runway. Correct. And any aircraft in the traffic circuit, the positions that we know, they all will be approaching from that point only, from where you will be entering the runway. So we have to assess the risk. How is the risk like? Now, I'll just imagine a diagram of the ATC circuit. Basically, the answer is if you see an aircraft switching on and off its landing lights, what does it mean? It means that they are unable to have radio communications, and this is a visual signal for an emergency. Correct. So they are under some sort of emergency. What is the definition of urgency? Can you give me a verbatim definition? It's a condition or a situation where the aircraft requires immediate assistance. Now, this is not verbatim. You have the rules of the air booklet with you, right? Yes, I do. Manual of RT also. From Mhm. either one of those, I want you to quickly find out the urgency, verbatim definition, and read out. ये आज के आज ही याद कर लो आप, because I'm expecting you to know. I want you to give accurate. So urgency, आप ढूंढो. I'll tell you the definition. A condition or a situation that affects the safety of an aircraft or its passenger or another vehicle or a person in sight, which does not require immediate assistance. This is one that we have learned in class. पहले तो ये भी बोलना पूरा accurately है जरूरी, and textbook definition भी जरूरी है. दोनों देना है हमें. पहले वो वाला रीड करना है, फिर ये वाला रीड करना है. आपका आंसर इनकम्प्लीट है. यू कैनॉट गिव मी आंसर्स विच आर इनकरेक्ट. आपको सोच समझ के ट्राई करके बेटर आंसर देना. कैनॉट अलाउ योरसेल्फ टू गिव हाफ आंसर्स, पार्शियल आंसर्स. Okay, sir. थिंक अबाउट इट. चलो फटाफट बताओ मुझे क्या है अर्जेंसी.
And if you're not able to access within 10, 15 seconds, it means that, okay, शायद आपको करना है. Like, So actually, I don't have my laptop with me. see, this is easy. You go on your drive. Okay. You go on your drive. It is on their phone also. It's there on the phone also. No, you have drive on the phone, and you download it in your phone. Download as like what? Offline copies. So this folder is shared. Okay. Yes, But I yeah, remote just bank is my shared. Yeah. Either you find in this book 1.1. See, it's very easy. It's very quick. You have to have this hands-on. Your ability to find information. Now here you should know कहाँ पे है ये definitions. Last exam we did talk about it. So ठीक है. So whenever an aircraft is on finals, and if that aircraft is switching on off its landing lights, we will make it as a mayday call if we are at runway holding point. And if the same aircraft is at base leg, then we'll make it a pan call. Okay. Yeah, that's the difference between the two. In certain areas, certain situations, some people might debate saying, no, यहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे ये होगा. So go with what ATC says, but you are the PIC and you will know how to assess the situation. So on finals, they have RCF, they have emergency, you're very close to the runway. So it's a threat to you. So you might want to ask instructions to vacate that area if that threat is to you. See, this landing area, maneuvering area, movement area, all these definitions are very important. आप प्लीज आपको ये करते रहना है. याद करो हमने क्या बात की थी. Mhm. But then see, I've gone through this one, so. yeah, good. And so urgency is a condition concerning the safety of an aircraft of or other vehicle or of some person on board or within sight which does not require immediate assistance. See, it's right here. Yes, I found it. Manual of rate. Take a screenshot of this. See, if you don't give keywords to them, the first set of keywords that they have to hear is a condition of being threatened by serious or an imminent danger. These are the keywords they'll want to listen to in the first few seconds of your answer. If you Okay. don't give them these keywords, they'll simply say, no, this is the wrong answer. Understand where you have to increase your focus. Now, you have understanding. Now, you have to have your keywords and your ability to describe what you're learning in keywords. Awesome, sir. चलो, क्या है urgency का definition? A condition concerning the safety of an aircraft or other vehicle or some person on board or within sight which does not require immediate assistance. Yeah, today's agenda, you have to finish this. Definition. Yeah, verbatim. Okay. So, base leg, it's urgency. Finals, it's distress. All right. Base leg. Okay. Yes, sir. इसको नोट्स में डाल लो आप. What's the other doubt? It's the air report. Mm-hmm. So you have to give 3 elements of weather. I understood the temperature and the winds, but I didn't understand what is DP35. No significant, I guess, or I don't know. DP, again an abbreviation. Where do you find out the meaning of this? In the abbreviation. Yeah. How long did it take for me to get it out? Like, it didn't even take 10 seconds. Dew point temperature. Dew point temperature. So dew point is that temperature where
Basically your moisture will convert into a dew or a dewdrop. In layman's term, that's the temperature where water vapor, you can say, will convert into water, something like that, like in layman's term. So there's that temperature is important Mm-hmm. for understanding basic weather around. So dew point is always there. So come on, Sanjana, these are your strengths. How quickly you can access the notes and documents for reference and for clarifying your doubts or for increasing your knowledge levels. This is a USP. This is what is going to increase your knowledge level and expertise for any topic or anything. So you have to, follow these instructions also as to how to find out the Yes. information with which you have doubt. फटाफट खुद देखो ढूंढो और फिर वो मेरे साथ शेयर करो. सो डीपी पे ये डाउट था, ये मिला, इसके अलावा कुछ करना है क्या डीपी का. So Mm-hmm. that's where you will yourself find information. You'll be self-dependent at the same time. Then of course you can ask more about that, but these things you can resolve. Like urgency distress पे doubt है, pan है, mayday है, you should have gone to the definition, by hearted the definition, gone to rules of the air, gone through the manual of RT and tried to find out कि मेरा pan एंड डिस्ट्रेस में कौन सी सिचुएशन आएगी, क्या डिस्क्राइब दिया है, किया है, Mm-hmm. क्या उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है. उतना ही करना है, आपको करना चाहिए. लाइक ये डाउट्स आपको ये ऐसे रिजॉल्व खुद से करने थे बिफोर यू बिफोर यू रीच आउट टू मी. Okay. अभी सेम चीज आई सजेस्ट यू टू ट्राई एंड डू इट अगेन. Negative. सिमिलर मेथड. Yes. It's only to help you more. This is it. You have to, like, you have the materials, you have the books, you have to just quickly know how to access them. फटाफट फटाफट फटाफट, उससे ज्यादा तैयारी होगी. Okay. So, but how do we say this? Dew point or dew point temperature 135. Just dew point. Dew point. Just dew point. Dew point. Negative significant. Okay, I think. What are you talking about negative? What is it that you're Yeah, saying negative? I was going through the reports, the call reports that you had shared. So it said like dew point 35 negative significant. Listen to this. Can you hear? Please press 1. Are you able to hear this? No, not clear. This Tell is me. Gandhi International Airport, New Delhi Office information. Input uniform. I'm UTC. 120. Are you able to hear that? I can't make Runway out. 27 and Focus. runway 29 left. Runway 27 and runway 29 left for arrivals. Runway 28 and runway 29 right for departures. Transition level, flight level. 5. Wind, 280 degrees, 5 knots. Visibility, 5 kilometers. Weather, haze. Cloud, 3,500 feet. Temperature, 34 degrees Celsius. Dew point, 23 degrees Celsius. UNH, 1005 hectopascals. Send, no significant change. This was in Gandhi International Airport Access Information Uniform. So this was Delhi But- ATIS uniform, information uniform. Mm-hmm. Actual temperature was 34 degrees Celsius and dew point was 23 degrees Celsius. So that's how it's read. Dew point, Dew point. 23 degrees Celsius. That's it. Okay. Even if you don't say Celsius, it's fine. You just say dew point 23. Okay. Yeah. I have shared this number in class. I'm sharing this number with you. Mm-hmm. This is exactly how your aerodrome ATC information or aerodrome weather report is transmitted to pilots. ATIS is very important. Whenever we use the code information in a startup call, Mm-hmm. that's when we do this. Okay. That's when we use. So the current code of the information is uniform. So you have to just say uniform to ATC before departure, before arrival, Mm-hmm. and they'll verify if they have the correct information. We have the correct information or not. Okay. इसको 2-3 बार सुनना और इसके सारे एसेंशियल्स निकाल लेना. ये Mm-hmm. सारे बेसिक वेदर इंफॉर्मेशन है. एंड एग्जाम में तो ये नहीं आएगा आपको, बट दिस इज लाइक रियल लाइफ फॉर यू. Okay. तो ये सब पढ़ा है, ये सब आना चाहिए खुद से. ऑल दीज डाउट्स कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय योरसेल्फ. इट्स अ गुड थिंग, बट at the same time it could be a bad thing कि what other things are you missing out on. We need to clarify all of them, क्योंकि ये सब
की हुई चीज़ है, जो जो हमने की है ना, वो तो हमें 100% आनी चाहिए। Yes, sir. What else? When I was going through the rules of the air, uh, it talked about overtaking and airspace class. Mm-hmm. So I didn't really understand the overtaking thing and what are the airspace classes. You'll study that in regulations. Keep it Okay. part. Okay. ओवरटेकिंग का एक बस रूल है कि आपको एयरक्राफ्ट को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। Mm-hmm. जो आगे चल रही है वो आगे ही चलेगी। ओवरटेकिंग अगर कोई एयरक्राफ्ट को करना है, इफ यू केयरफुली लुक, देन उसमें सिंपल ऐसा है कि only maybe there is a one way that you can overtake, otherwise you cannot overtake any aircraft. So basically you cannot overtake any aircraft. And रही बात airspace की, तो there are different type of airspaces, just the way we have RVSM. Okay. RVSM is an airspace within an airspace. Generally airspaces have classes, class A, class B, class C, D, E, F. Depending upon the classes, we have either VFR, VMC, or IFR, IMC, or you will get different type of ATS air traffic services in different type of airspaces. So when you'll do regulations, you'll study in detail about airspaces. Okay. But for you to make an understanding, you can just see that in my rules of the air, this VMC table that I have, VFR table. Remember to remember by heart this table. Okay. Yes. Visibility की जो table है, उसमें देखो Very airspace ऊपर के है वो। classes थे। हाँ, पेज नंबर बताओ। हम नीचे आ गए बहुत। पेज नंबर बताओ, मुझे पता करो। एक्सक्यूज मी। हाँ 36. तो आप ये देख रहे हैं क्लास A, B, C, D, E, F, G, and Sanjana, can you see this? Yes, sir. You have three ranges for VFR and VMC, and different airspaces have different applicability of your VFR rules. So यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा है, बेसिक डिस्क्रिप्शन है इनका, कौन से एयरस्पेस में क्या होता है, कौन से एयरस्पेस में क्या होता है। सो यू कैन कीप इट पार्ट फॉर फर्दर रीडिंग। बाकी सब हो गया है तो अभी भी आप रीड कर सकते हो, एंड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि कौन से क्लास एयरस्पेस में क्या रहता है। Okay. व्हाट एल्स? That's about it, sir. देखो और कोई डाउट्स रहेंगे तो। नहीं है सर, अभी तो इतना ही लिखा है। ओके, सो ठीक है, एयरस्पेसेस इज इंटरेस्टिंग, यूल सी इवेंचुअली। अच्छा है, पता होना चाहिए। देखो एक एस्ट्रिक्स हमें दिया था, क्या दिया है यहाँ पे, VMC minima in class A airspace are included for guidance to pilots and do not imply acceptance of VFR flights in class A airspace. So generally class A airspace है ना, बड़ा हाई टेक होगा,
एंड हर कोई वहाँ पे नहीं जा पाएगा, बस हाई लेवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड इट्स लाइक दैट ओनली, लाइक कौन से एयरस्पेस में कौन से एयरक्राफ्ट को अलाउ करेंगे। Okay. या सो ट्रेनिंग फ्लाइट सारे स्पेस क्लासेस में नहीं जा सकती हैं, अगर जाएंगी तो स्पेशल परमिशन के साथ जाएंगी। इन सिंपल वर्ड्स, देर आर ऑब्वियसली लाइक स्पेसिफिक वेरिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू vertical range of the airspace and horizontal range of the airspace. Mm-hmm. Good. Very happy to see your questions. Like, now this is how it is. When you really want to understand everything, then you need to know these things. Like, you should be like, अरे आपने आरटी कर लिया, रूल्स ऑफ द एयर कर लिया, बट क्लास ऑफ एयर स्पेस नहीं पता आपको, इसका Mm-hmm. मतलब आपने कुछ तो मिस किया है। इट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक द क्वेश्चन। वी विल गेट टू रीड बिफोर एग्जाम्स, है ना? एंड टाइम मिलेगा तो मे बी यू कैन अटेंड अ सेशन ऑल्सो ऑन दैट। इट्स नॉट Okay. कंपल्सरी बट इट्स गुड, इवेंचुअली तो पढ़ना ही है हमें। ओके, Yeah. अर्जेंसी और डिस्ट्रेस का डेफिनेशन बता दो, याद हुआ कि नहीं? एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर प्रेपरेशन। Okay. सॉरी, लेट्स स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिस क्विकली। नो क्वेश्चंस? No, sir. Negative. डू यू हैव चार्ट्स एट हैंड? Yeah. Okay. So you want to like, okay, we'll do a, you don't want to come on video today? You comfortable like this? It's fine, no problem. Mm. Uh, we'll do blind. We'll do blind experience, or you want me to keep the video on? Yeah, blind. Fine. Do well and don't allow you to confidently give me incomplete calls or wrong calls. Yes, sir. अटक रहे हो, फंस रहे हो, फिर रॉन्ग दे रहे हो, चल जाएगा। कॉन्फिडेंटली रॉन्ग दे रहे हो तो आई वांट यू टू ट्राई एंड अवॉइड दैट। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या नोटिस किया था? सब internal elements in the call can be used more, radial Mm. DME, flight level estimates, etc., etc. So उस Mm-hmm. पे काम करना है। End with your call sign, replies, everything पे ध्यान देना है आपको। ओके, Yes, sir. चलो, all the best. You imagine you're in the waiting room, and the moment I share the paper, we'll start your timer and we'll get started. Mm-hmm. Do well and quickly feedback लेंगे और doubts resolve करेंगे। Okay. Okay, Yes. चलो, all the best. Thank you. Oh, thanks. I saw भाई के birthday का है। ये कौन सिखाता है? That was good. Now you can say मेरे पीठ पे मारा है रितेश ने। पीछे मारे कर फिर तो मुंह पे किया। नाइस गाना, वेरी पावरफुल। कौन पैसा, कौन फायदा उठाता मजबूरी का? इधर है लोग। नाइस गाना। क्या लगी क्या? अरे यार, फिर मैं आजकल वो मैंने जो ट्यूशन बता रहा हूँ, मुझे जरा लगा कि ये नहीं है। अरे आप कर देता बट फिर तुम वहाँ यूपी में निकल नहीं सकता। मुझे तो मौका चाहिए बस वहां जाने का।
Sanjana, do you have copy of charts with you? Affirm, sir. Okay, I hope you have 30 minutes extra because it's already 6. How's your schedule like? Yes, it's okay. I can stretch on to 7. No, we have to try and wrap up by 6:30 anyhow. Okay. बाकी half an hour आप please go through the notes and definitions and जो भी रहेगा if you have time. Yes, sir. वैसे तो feedback में 10 मिनट लगेगा ही. Okay, चलो, let's get started. So this waiting thing and this surprise thing is what I want to initiate. आज भी हम वही करेंगे, but like it's fine, कोई नहीं. Are you able to see the screen, Affirm. the paper? Okay, you can start transmitting. Yes, sir. Question number 1, alpha. Delhi ground. Pixie 7659er. This is not how you say this call sign. Question 1, alpha. I say again. Delhi ground. I fly 7659er. Stand 2. VFR Delhi to Bhopal. IFR Bhopal to Nagpur. Flight level 330.
Security check cleared. Airbus 320. Passenger on board 180. Request startup for flight level 330. Information Bravo. Fly 7659er, Delhi ground, startup not approved. Startup not approved. Request reason. iFly 7659er. Startup not approved due traffic, expect delay to 5 minutes, Delhi ground. Startup not approved due traffic, expect delay 5 minutes, request startup as hospital flight iFly 7659er. Go to next question. Question 1 Bravo. Delhi Tower iFly 7 disregard. Question 1 Bravo. Pan 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 pan. Delhi Tower iFly 7659er at runway holding point runway 27. See an aircraft on base leg switching on and off landing lights, holding position, request further instructions. Go to next question.
Question number 2, Alpha. Pan pan, pan pan, pan pan. Delhi Tower. I fly 7659er. Departed Delhi. Runway heading 27. Experiencing sluggish hydraulics and flaps are stuck, unable to retract them. Request instructions to fly back to Delhi. Aircraft overweight for landing. Request sector. Flying. Go to next question. Delhi, question number 2, Bravo. Delhi Tower. I fly 7659er. Flaps are working normal. Passing flight level 70 for flight level 100. Request further climb. Go to next question. You take a screenshot of the paper. For a second, I'm just turning off the screen share. Yes, I believe you can, sir. Yeah. You continue answering. Okay. Question number 3. Okay, I've uploaded it again. You can use any reference. Question number 3. Delhi radio. Copy. Mumbai
radio. I fly 7659er. FIR report. I fly 7659er. Departed Delhi at 0940. Estimating Bhopal. One zero one zero Delta 1020 flight level 330 Whiskey 20 South 100 DME inbound Bhopal radial 342 ETA Nagpur 1030 Airbus 320 passenger on board 180 changing over to Mumbai radio. Go to next question. Question number 4 Alpha. Mayday, Mayday, Mayday. Nagpur Tower. I fly 7659er on downwind runway 27. See another aircraft head on altering heading to right. To avoid collision, request further instructions. Airbus 320 passenger on board 180 hospital flight. I fly 7659er. Nagpur Tower. Roger, Mayday. Once
clear of traffic, climb to 3,500 feet, intercept radial 340 25 DME or less, report reaching. Roger, Mayday. Clear of traffic. Climb 3500 feet. Intercept radial 340 25 DME or less. Wilco iFly 7659er. Go to next question. So could you please let me know what is DH? You didn't study? Did you not read abbreviations booklet? Have you not done ILS? You don't know what is DH? Oh. Question number 4, Bravo. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan. Nagpur Tower. iFly 7659er. On finals, runway 27, see an animal on runway 27, initiating missed approach, and go around procedure. Go to next question. Question number 5. Nagpur Tower, iFly
7659er landed on runway 2, runway 12, cabin crew informed about loud noise from under the cabin. Request immediate taxi to apron as hospital flight Nagpur Tower, I fly 7659er. Okay, time's up. Okay, time's up. Please share your logs and let's quickly discuss. I'll share the paper, sir. Yeah, please. Do you take a picture of the question paper for reference? Yes, sir, I did. Just allow me a minute. Sorry, say again. Please allow me a minute, sir. Sure, sure. Say standby, no? RT students. I don't mind you sharing pictures also. If you cannot share PDF, it's fine. Almost done, sir. No problem.
I've sent it, so. Okay. How was the experience? How was the flight plan? And how was the performance? Okay. I found it a little tough for me. Mm-hmm. What was so tough? Did you understand the flight plan? Yes, I did. It was hospital flight from Delhi to Nagpur, Mm-hmm. and Aurangabad was the alternate aerodrome. Mm-hmm. Flight rule was Yankee, VFR first, and then IFR. Mm-hmm. And aircraft was Airbus 320, Mm-hmm. flight level 330, and later flight level 130. Mm-hmm. What situations did you encounter en Uh, route? um, En route, yes, I had sluggish hydraulics and flaps were stuck. Then my flaps started working normally. Mm-hmm. Um, and then I saw an aircraft coming head on. So I had to alter my heading to right. And the question number 4, Bravo at DH, I'd actually read this long back because I had seen Okay. one of your mock calls with a student. And then I had searched what this was for. And again, I forgot. And again, question number 5 was something new. I didn't really understand what to do. I was trying to imagine, okay, I've just landed on the runway and the crew informs what would I be doing? And the thing that the time is running up, should I just take the call or, frame it in my mind, like what should I be actually doing? So, Okay. What else? yeah. And I think, I mean, I knew that, okay, yes, very important. The first question, uh, I was just about to say after information Bravo that request immediate startup as hospital flight, but then I received your transmission, so I had to continue with that. So I think my time got extended because the call got a little lengthy because I didn't mention it before. Okay. Yeah. Okay. Okay. Look at the screen. This is the summary page for ILS. Okay. It's there in our drive. In ILS, you see the mention of DH. Okay. We already know what is RVR. ILS guidance limits. Instrument landing system has different categories with respect to its accuracy of performance. There's Okay. certain instrument landing systems which will give you accuracy without any visibility on the aerodrome. They are called category 3C, which is here, Cat. 3 Charlie. Similarly, we have Cat 1, we have Cat 2, we have Cat 3. Okay. And in 3, we have category 3A, 3B, and 3C, like this. Okay. So decision height is that altitude. So see, these definitions are important. They are well within their rights to ask you these questions. What is decision height? What is height? What is altitude? What is RVR? Mm-hmm. So decision height is that height that the pilot during arrival for landing will make a final decision whether to go and land or not. It Okay. is with respect to making the final call of landing by looking at the runway. Generally, whenever you need the runway to be in sight, decision height matters. Where you don't need the runway to be in sight, decision height will not matter. There's only one ILS system where you don't require any visibility, and that is Cat 3C. Okay. But Cat 3B is less than 50 feet or up to 0 feet, and Cat 3A is less than 100 feet or up to 0 feet. So there are three categories with respect to decision height. Category 2 has decision height 100, and category 1 has decision height 200 or more.
So depending upon which category ILS you have, you should know your decision heights. तो 1 2 3 ABC तीनों का DH याद कर लेना, तीनों का RVR याद कर लेना. Okay. So कभी कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें कैटेगरी दी होगी और क्वेश्चन में आपको या तो 100 फीट बोलेंगे या 50 फीट बोलेंगे, तो आप समझ जाओगे कि आप डिसीजन हाइट के नीचे हो, आप लैंड नहीं कर सकते हो. यू हैव टू इनिशिएट अ मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर. Okay. सिंपल. फाइनल्स पे कुछ भी होता है अनलेस इट इज अलोंग विद अ, व्हाट डू वी से, अनलेस इट इज अलोंग विद अ इमरजेंसी. फाइनल्स पे कुछ भी होता है, यू इनिशिएट अ मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर. If it goes hand in hand with couple of more terms like uh, e- urgency or distress, then वो combine हो जाता है. Then urgency and distress will take what do we call it? Take more importance in the call. RVR कितनी होनी चाहिए कैट 1 के लिए? 550 meters or more. कैट 2 में 300 meters or more. कैट 3 में 200 meters or more. कैट 3A में, कैट 3B में 75 meters or more and कैट 3C में 0M. सो एयरक्राफ्ट के पास कौन सा कैट ऑफ ILS है कैटेगरी, एंड एयरपोर्ट पे कौन सी फैसिलिटी है, दोनों मैच होनी चाहिए. Okay. एयरपोर्ट पे कैट 1 है तो मेरा कैट 3C नहीं लैंड कर पाएगा ILS. तो कैट 3C वाले को समझना होगा कि उसको 200 फीट पे DH वाला जो भी होगा उसको उस पर फॉलो करना होगा, वो कैट 3C नहीं यूज कर पाएगा वहां पर. सो Okay. ऑल मेजर एयरड्रोम्स विल हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी, और फिर सब होता है यहाँ पर. तो ये टेबल आप याद कर लेना, आपको आगे जाके काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा. RVR एंड DH याद कर लो, और ध्यान से देखो तो फैसिलिटी एंड ऑपरेशनल. तो फैसिलिटी इज लाइक बेसिकली द सिस्टम, द ट्रांसमीटर, द एंटेना, द होल सिस्टम. ऑपरेशनल इज बेसिकली हम लोग इस फैसिलिटी में आपको क्या क्या प्रोविजंस दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट के पास कौन सा सिस्टम है. सो रिमेंबर दिस इज डी डिसीजन हाइट. डिसीजन हाइट मतलब आपको डिसीजन लेना है लैंड करना है कि नहीं. अब रनवे पे कुछ है तो आप लैंड नहीं करोगे, सिंपल कॉल है, बस कंफ्यूज किया. इट्स जस्ट द सेम कॉल, फाइनल्स लॉन्ग फाइनल्स वाला कॉल है. Okay. आप अपने आप को फाइनल्स में इमेजिन कर सकते हो. कहीं ना कहीं आपने सही किया है, आपने इनिशिएट मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर बोला. सो आई एम वेरी हैप्पी इवन दो यू हैड अ कंफ्यूजन. गुड थिंग अपने एग्जामिनर से हिंट पूछा, आई रियली अप्रिशिएट इट. गुड जॉब, नॉट बैड एट ऑल. एंड आंसर दे दिया तो ठीक है, आंसर नहीं दिया तो ठीक है. इट डिडंट चेंज योर परफॉर्मेंस, एंड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स. तुम सही जा रहे थे, बस वो मेडे या पैन पैन कॉल नहीं था बस. बट देखते हैं, फटाफट असेस करते हैं. सो रिमेंबर दिस, ओके. ये DH यहाँ पे पिकअप करना आप. Yes, sir. एंड ठीक है. और क्या दिक्कत थी आपकी? एनीथिंग या मिस्टेक्स, समथिंग दैट यू कुड हैव अवॉइडेड? Yeah, the first thing for the hospital that I made it long, and I guess question number 2 alpha, I mixed up everything. I feel I don't know if it's the right thing or wrong, but I messed up everything here. See, whenever you have a startup call, understand the only catch, apart from any real-time situations that ADC could give you, is related to your other information. Other info. Your special handling is a hospital flight, so you have to request your startup on priority. Yes. The mistake that I observed you might have made is you're not framing your call in your mind and then giving. I think you're just giving your calls, and that is not bad also, because your calls are not that bad. They're very good. But if you could think and give calls, then your calls could be very perfect also. I can say you have made slight errors in every call, and I could see that maybe she's not just thinking a little extra before making the call. Yeah, that's right. So please do that, because इंटेलिजेंस है, बिल्डअप हो रहा है. थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा मॉडेस्ट रह के और सीखना है. बाद में देखो आप शो ऑफ करने लायक हो जाओगे. लाइक जब भी आप बोलोगे परफेक्ट ही बोलोगे वैसा. अभी भी आई थिंक इट्स टू सून फॉर यू टू स्किप दो स्ट्रैटेजीज एंड गिव ऑल कॉल्स. Okay, sir. तो थोड़ा सोच के करोगे तो शायद आपके ऑटोमेटिक मिस्टेक्स वेरीफाई हो जाएंगे. यू आर आस्किंग समथिंग? Yes, sir. I wanted to say like other information, it says aircraft registration. So that means that instead of I fly 7659, I could have used that one as well, right?
No. If you No? have given an airline code, then that will take preference. Why is it mentioned particularly? Doesn't matter. It will be there on all flight plans. Confused, is it? Just to play with your mind over here, but you have to have awareness that it could be applicable also Okay. anywhere. दे दो ना अपने कॉल्स में इंफॉर्मेशन दिए तो क्या जा रहा है. Okay. So like startup information, Bravo, hospital flight, and I can say aircraft registration. So as विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर जुलू या बोल well. सकते हो. हाँ, बट गुड थिंकिंग. बट यहाँ इसका कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है. Hmm. बट एफआईआर रिपोर्ट में दे सकते हैं एंड कहीं भी डाल सकते हो इसको आप. बट गुड थिंकिंग. बट अच्छा आपने चेंज नहीं किया. Hmm. बट हॉस्पिटल फ्लाइट पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए था. Yes. उस पर थोड़ा कम था बस. Hmm. स्टार्टअप कॉल देखो आपको इसीलिए लग रहा है आपके कॉल थोड़े स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़े लेंदी है, बिकॉज आपने वो दिमाग में फ्रेम करने वाली टेक्निक नहीं अप्लाई किया. आपका वो करोगे ना तो अपने आप रिफाइन हो जाएगा कॉल. Yes, sir. आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ आपके पास टाइम बच ये रहा है. वही हो रहा है. तो आप टाइम की टेंशन मत लो. है ना, अभी मत लो टाइम की टेंशन आप. अ, चलो एसेस करते हैं. चलो फटाफट क्विक एसेस. और कहीं भी दिक्कत है मुझे बताना आप. Yes, ठीक है. sir. ओके. स्टार्टअप कॉल है. हॉस्पिटल फ्लाइट है. स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी बोलना है, आपने वो नहीं बोला. Hmm. उसके अलावा ये बहुत गलत कर दिया आपने स्टार्टिंग में ही. अगर एटीसी हिंट नहीं देता और आपको करेक्ट नहीं करता यहाँ पे, अगर, Hmm. तो शायद पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाते आप. और शायद वो कॉल्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं दे करता. कुछ ना हाँ, कुछ दिक्कत होती. यू correct. कैनॉट अलाउ योरसेल्फ टू मेक इनिशियल मिस्टेक्स. तो पहले क्वेश्चंस में आप 2 मिनट ले लो, चल जाएगा. आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है. Hmm. आई डोंट माइंड द पेस अनलेस देर इज नो एरर्स. आई डोंट Okay. माइंड द पेस. एरर हो रहा है. 6 एको 7659 बहुत बड़ी गलती की आपने. सिचुएशनल अवेयरनेस मिसिंग था. यहाँ तो एटीसी ने बोल दिया, अब तो आप बच गए. एटीसी नहीं बोलता ना तो आपको नो रिस्पॉन्स मिलता और 10 मिनट आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं वहां पर. Okay, sir. Understand. फिर ठीक है, फिर आपको पता तो था आंसर. एक ही Hmm. इंस्ट्रक्शन आपको मैंने दिया था कि कॉन्फिडेंटली गलत आंसर मत देना. और आपने वो यहाँ से ही शुरू किया. फोकस ऑन दीज सॉफ्ट स्किल्स जो सिखा रहे हैं आपको. ये टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है. Yeah. I mean, I flew with Indigo. I've always heard I fly, but वो pressure में click ही नहीं हुआ कि ये fly. तो इस पे प्लीज ध्यान दो Yes. आप. इट्स वेरी फनी इट्स लाइक, ठीक है, आई नो यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड आई कैन सेंस दैट, बट व्हेन यू मेक एरर्स इट विल फील फनी. I get क्योंकि it. कॉन्फिडेंटली एरर करता है ना तो वो बड़ा फनी हो जाता है फिर. Yes. लाइक, या आई मीन, फिर आपने खुद से ही आई फ्लाई 7659 बोला तो बोला ठीक है, एक ही चीज तो बोलिए करने, वो भी नहीं कर रही है, ठीक है. बट एनीवे उसके आगे आप देखोगे तो स्टैंड टू वीएफआर ठीक था. बस स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी नहीं बोला. यहाँ पे आपको हिंट मिल गए. नॉट अप्रूव्ड. आपने रिक्वेस्ट रीजन पूछा एंड विद कॉल साइन अच्छे से किया आपने. लॉग्स तो काफी अच्छे हैं आपके. ड्यू ट्रैफिक एक्सपेक्ट डिले. ये भी हिंट था कि अरे समझो आपका हॉस्पिटल फ्लाइट है, आप डिले नहीं ले सकते हो. इसका रिप्लाई परफेक्ट नहीं था बट नॉट बैड ऑल्सो. लाइक स्टार्टअप नॉट अप्रूव, ड्यू ट्रैफिक, एक्सपेक्ट डिले, रिक्वेस्ट स्टार्टअप एज हॉस्पिटल फ्लाइट, एज वर्ड नहीं आएगा. Hmm. रिक्वेस्ट स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी. कहीं ना कहीं तुम्हारा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लिक हुआ. सो वेरी गुड. बट यू आर नॉट यूजिंग द कीवर्ड्स देयर. Correct. ठीक है. तो यहाँ से आपके फीडबैक चालू हो गए. फोकस, थिंक एंड देन मेक कॉल्स. Yes, sir. तो समझ में आ रहा था कि मिस्टेक कहाँ हो रही है. बस वो चीज़ करोगे ना तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी. Yes, sir. दिक्कत नहीं है. यहाँ आपको बस प्रायोरिटी यहाँ भी डाल देते ना तो आपके कुछ ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होते. Hmm. है ना. क्लिक होना चाहिए. स्पेशल हैंडलिंग प्रायोरिटी कॉल्स, स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी, डिपार्चर ऑन प्रायोरिटी. यू देखो सिर्फ ट्रैफिक है, Hmm. वेदर नहीं है. Hmm. आप क्या बोलोगे आइडियली यहाँ पे. रीडबैक सही था. स्टार्टअप नॉट अप्रूव ड्यू ट्रैफिक. Hmm. ये जो एक्सपेक्ट डिले है ना उसका आप रीडबैक देते. ध्यान से सीखो इसको. अनेबल टू टेक डिले Ah, okay. ड्यू हॉस्पिटल फ्लाइट
request startup on priority. Okay, sir. I fly 7659er. ऐसे होगा startup not approved, unable to take delay due traffic, request due hospital flight, request startup on priority. That's it. ये Okay. आइडल रिप्लाई होता, आपने लिया ही, अच्छा किया, कहीं ना कहीं बस एक्यूरेट नहीं था, बट ठीक था, यू वर देयर, बस प्रायोरिटी वर्ड अगेन मिसिंग था। तो ये एक एरर है बड़ा वाला, बेसिक एरर। Okay. स्टार्टअप कॉल्स, प्रायोरिटी हैंडलिंग, ये प्रायोरिटी वर्ड मिसिंग है हमारा एक, वो पूरी स्टार्टिंग से ही मिसिंग है, तो बाद में भी मिस हो गया वो। ये सेम चीज हमने पास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस की थी, एक गलती हमारी बार बार गलतियां करा रही है। इस पे काम कर लो तो गलतियां कम हो जाएंगे। Okay, sir. 1 ब्रावो दिल्ली टावर डिसरिगार्ड, फिर आपको याद आया सेम, यू आर स्टार्टिंग टू फास्ट, प्लीज थिंक एंड स्पीक, सोच के करोगे तो ये गलती होती नहीं, डिसरिगार्ड होता ही नहीं, टाइम वेस्ट होता ही नहीं, आप सीधा पैन बैन से स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, बट अच्छा हुआ आपने पूरा लॉक किया है। थिंक एंड देन डू द कॉल, पैन पैन सीएन एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन वही मैं सोच रहा था, व्हाट आर द ऑड्स, ये आज ये क्वेश्चन पूछ रही है, कल परसों अमित ने दिया था, आज मैं आपको भी एक क्वेश्चन देने वाला था, सो आई लाइक द सिंक दैट यू आर इन। अच्छा, ये डाउट पहले रिजॉल्व किया आपने, आपको इजी हो गया आंसर। See an aircraft on base, क्योंकि पेपर पहले बन चुका था, so I didn't want to change the paper for you. Okay. Switching on off landing lights, holding position, request further instructions. ठीक था। पैन पैन थोड़ा ट्रैफिक डिस्क्राइब कर सकते हो आप? Describe the traffic. Appears to be a Boeing 737, white in color. Appears to be a passenger jet. Appears to be a traffic correction training aircraft. थोड़ा और दे दो। आप अपना भी बोल सकते हो, एक्सरसाइजिंग कॉशन ड्यू हॉस्पिटल फ्लाइट, Okay. क्योंकि आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, रनवे पे मिसहैप हो गया, तो आपका तो डिपार्चर डिले हो जाएगा, एंड आप तो हॉस्पिटल फ्लाइट हो, मतलब आप किसी की जान के लिए जा रहे हो, तो वो कनेक्ट रखना है। एसटीएस का हर कॉल में आ सकता है वो आपके, तो एसटीएस पे प्लीज फोकस रखना, ओके, So, स्पेशली प्रायोरिटी कॉल्स। okay, I actually want to know hospital flight, it means like it's the normal passenger commercial flight that we take and we have some passenger that requires medical assistance, or does it, Yeah, it's a special handling for passenger flight, we are using passenger flight for some priority purpose. so we have क्योंकि other passengers also on board along with the one who requires? Okay. you might very well have just human organs on board in a hospital flight, or you might be just, you know, Like a stretcher on board a that comes. stretcher on board. You're just working on behalf, you're just transporting something from Ah, hospital to hospital. It could be okay. a passenger also, it could be medicines also, it could be vaccination also, it could be organs also. Okay, noted. ओवरऑल नॉट बैड, अच्छे कॉल्स थे, सिंपल सिंपल एरर्स हैं, है ना? ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, बट हाँ, कॉन्फिडेंट एरर्स में मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम है, लाइक आई स्टिल से कि वी हैव वर्क टू डू, Yes. बिकॉज ऑन अ बैड डे इट विल बैकफायर। Yeah. तो वो एक रूम ऑफ एरर नहीं छोड़ना है हमें। Hmm. क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा, अगेन पैन पैन हाइड्रोलिक स्लगिश, रनवे हेडिंग बोलते हो तो वापस से रनवे बोलो, रनवे हेडिंग रनवे 27, Oh, डोंट से रनवे हेडिंग 27, डजंट मेक एनी सेंस, okay. ओके। Yes, sir. एंड पैन पैन ठीक था, अच्छा था, हाइड्रोलिक स्लगिश, फ्लैप्स आर स्टक, अनेबल टू रिट्रैक्ट देम, खुद का आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो, नॉट बैड। इंस्ट्रक्शंस टू रिटर्न बैक, Hmm. रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू सेट कोर्स टू दिल्ली, ये बोल सकते हो आप। टू फ्लाई बैक मत बोलो, एंड क्यों बोलना है, पहले आप बोलोगे वुड लाइक टू रिटर्न बैक टू दिल्ली, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू सेट कोर्स, aircraft overweight for landing, request sector to sector to exhaust Exhaust fuel. Yeah. fuel, radial 1242, radial 140, flight level 50, duration 20 minutes, ऐसा। Hmm. आपका प्रेजेंट फ्लाइट लेवल भी नहीं लिखा आपने, प्रेजेंट फ्लाइट लेवल या ऑल्टीट्यूड, सो आप बोल सकते हो डिपार्टेड दिल्ली passing 3500 feet for flight level 70 or something hypothetical if it Okay. is not given to you in your ATC clearance.
Yes, तो sir. सिचुएशनल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और लेट्स कॉल इट पोजीशन अवेयरनेस, यहाँ पे मिसिंग था। Hmm. छोटी सी है बट बड़ा एरर है ये, ठीक है। Yes. फ्रॉम अ पायलट पर्सपेक्टिव बड़ा एरर है, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अरे इमेजिन करो ना, आपके Hmm. सारे 3 डायमेंशन इमेजिन करो आप रनवे हेडिंग पे हो, एक डायमेंशन मिल गया, दूसरा वर्टिकल डिमेंशन क्या है, यू आर इन फ्लाइट। Hmm. सो मैं इससे उस पे जा रही हूँ, बीच में कुछ हो गया है, मैं वही मेरे टारगेट फ्लाइट लेवल पे ही सेक्टर लेना है, 2 रेडियल एंड ड्यूरेशन, यही तो है सेक्टर फ्लाइंग में। सो आपने सेक्टर फ्लाइंग के सेक्टर नहीं बोले हैं, 2 रेडियल, ड्यूरेशन, फ्लाइट लेवल एंड, Time. बट हाँ, तो यही चीज अगर दिमाग में ये कॉल को पर बना लेते ना, रिफाइन हो जाता, तो परफेक्ट दे जाती है। क्योंकि Hmm. तुमने इंस्टेंटली इतना अच्छा कॉल दिया है मुझे कि सारी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं बस। Hmm. सेक्टर में पूरा सेक्टर नहीं मांगा, रनवे के लिए रनवे नहीं बोला, Hmm. बाकी सब कुछ बोला है, बट प्रेजेंट ऑल्टीट्यूड नहीं बोला। 3 चीजें मिस हो गई, 6 मार्क चले गए। 2 मार्क वो बोलेगा अरे परफेक्ट नहीं था, तो 8 मार्क निकाल लिया ना उसने हमारे Correct. फालतू में। Hmm. इतने होते हैं स्ट्रिक्ट, ऐसा कर सकते हैं करने वाले। Okay. और सुनने में तो आपको तो अच्छे से ही दिया आपने, फिर आप बोलोगे सर मेरी क्या गलती थी, मैं बोलूंगा थी, वो छोटी गलतियां थी, कुछ तो होगा ही, ऐसे तो मार्क्स नहीं काटेंगे। Correct. समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes. बट गुड And कॉल, राइट कॉल। इनकम्प्लीट है थोड़ा बट राइट है। कहाँ इनकम्प्लीट है वो समझो और उस पर मेंटली काम करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप मुझे उस पर दिखाओ कि आप सही कर रहे हो। so, even if they mention only, I mean, sluggish hydraulics, it will always be mentioned that flaps are stuck, or they can नहीं, ये put it जानबूझ down. के 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया Mix था किया कंफ्यूज ना. करने के लिए। हाँ. नेवर थिंक वो लोग हमेशा ऐसा कुछ देंगे, ऐसा कुछ थॉट ही मत रखो आप। Hmm. ये तो बस डिफरेंशिएट करनी थी, फ्लैप्स तक सिर्फ फ्लैप्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, Hmm. हाइड्रोलिक फ्लैगिश की वजह से भी हो सकता है, दोनों को मिक्स किया है। Hmm. फ्लैप्स नहीं दिए हैं तो सिर्फ हाइड्रोलिक्स बोलो, लैंड बैक बोलो। अच्छा. सेकंड क्वेश्चन में होगा हाइड्रोलिक्स वर्किंग नॉर्मली। Hmm. ये फ्लैप्स क्यों खराब है, हाइड्रोलिक्स लगिश की वजह से। आपको बस फ्लैप्स में प्रॉब्लम दिख रही है, बट हाइड्रोलिक प्रेशर भी लो है, तो सब कुछ प्रॉब्लम्स देगा आपको। Okay, so तो if it's only sluggish hydraulics, then we tell them that experiencing sluggish hydraulics and would like to return back to Delhi, request the सेम instructor to सेक्टर check. सेक्टर ही आएगा, यहाँ पे भी सेक्टर ही सेक्टर आएगा. आएगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट इज स्टिल ओवरवेट फॉर लैंडिंग। ओवरवेट. करेक्ट. तो मुझे वही कंफ्यूज हो रहा था कि ओवरवेट भी है तो सेक्टर मांगना है या रिटर्न चले जाना है. आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड. रिटर्न ही आ रहे हो, बस बट ओवरवेट लैंडिंग नहीं कर रहे हो तो सेक्टर मांग रहे हो। ओके, ठीक है. फ्लैप्स अटक गए हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम्म. आप ज्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं क्लाइम कर पाओगे, बट जिस ऑल्टीट्यूड पे हो वहां पे थोड़ा एयरक्राफ्ट का फ्यूल बर्न करने के लिए तो फ्लाई कर सकते हो आप। ओके. ओके. हाइड्रोलिक स्लगिश में सिर्फ फ्लैप्स नहीं खराब होंगे, आपके प्राइमरी कंट्रोल्स भी खराब होंगे, सो यू कैनॉट फ्लाई विथ स्लगिश हाइड्रोलिक प्रेशर। So this can also be given as your primary controls. नो नो नो, वो कंप्लीट हाइड्रोलिक फ्लेयर में हो, वो फेलियर में कंप्लीट होगा, हो. कंप्लीट ओके. में होगा। टोटल, कंप्लीट, डुअल, हम्म. सिंगल हाइड्रोलिक पैन पैन, डुअल हाइड्रोलिक मेडे, Made it. 2 सिस्टम्स है ना हमारे पास। ओके. फ्लैप्स आर वर्किंग नॉर्मली में कैंसिल पैन पैन बोलना है, स्टार्ट योर कॉल लाइक दिस, पैन पैन, दिल्ली टावर, आई फ्लाई 7659er, कैंसिल पैन पैन, फ्लैप्स आर वर्किंग नॉर्मली, पासिंग दिस फॉर दिस, हाँ. रेडियल बोल दो, डीएमई बोल दो, एस्टिमेट्स बोल दो, टॉप ऑफ क्लाइंब बोल दो, जो हाँ. भी है, और फिर बोलो रिक्वेस्ट क्लाइंब। यहाँ ओ. पे भी बस पोजीशन अवेयरनेस वीक था, और हाँ. कैंसिल पैन पैन का फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो। यस, यस. पैन पैन बोल के W1 W2 कैंसिल पैन पैन, So we ऐसे बोलना है आपको। pan pan only once now. वंस, अच्छा. इसमें कुछ लोग डिबेट करेंगे, आप हम्म. वंस बोलो, थ्राइस मत बोलना। हम्म. कुछ लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, बोला हाँ पता है बट आई वांट टू स्टिल स्टार्ट, तो मेक देम नो दैट मैंने ही कॉल किया है वापस। ओके. ओके. तो कैंसिल पैन पैन पे प्लीज ध्यान देना, यू आर ऑब्लिवियस टू इट, अगेन थोड़ा सोचती शायद इंस्टिंक्ट क्लिक क्लिक करता आपको, ठीक नहीं, है। कैंसर पैन पैन का आइडिया ही नहीं था. याद रखो अभी सब, यस. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एग्जाम्स के लिए कॉमन है, एक दिया मेडे पैन पैन तो बाद में कैंसिल आ ही सकता है, ऐसा सोचना है। तो मेडे भी मेडे, W1 W2 कैंसिल मेडे, सो एंड सो आई एम हियर, आई वुड लाइक टू गो देयर एंड देयर, दोज आर माई एस्टिमेट्स, दोज आर माई ETA, गिव मी माई क्लाइम, और फॉर द इंस्ट्रक्शन, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, रीजॉइनिंग इंस्ट्रक्शन, रीराउटिंग, जो भी मांग रहे हो आप। लेकिन इन्फॉर्मेशन देखो बहुत कम है इस कॉल में। हम्म.
बट एक चीज अच्छी लगी कि चलो अपने यहाँ पे अपना ऑल्टीट्यूड दिया है, बट डायरेक्शनल रेफरेंस चाहिए ना, रेडियल डीएमई कुछ एस्टिमेट्स, थोड़े इनिशियल एस्टिमेट्स दे दो, टॉप ऑफ क्लाइम दे दो। हम्म। अच्छा तुमने क्लाइम मांगा है बट टॉप ऑफ क्लाइम भी बोल सकते थे, ओके। है ना। यस सर। इनकम्प्लीट है कॉल, इस कॉल पे हक से आदमी बोलेगा दोबारा एग्जाम देनी पड़ सकती है, सो प्लीज कॉन्फिडेंटली हैव टू चिप इन बिकॉज यू नो एवरीथिंग, यू कैनॉट मिस आउट, यस सर। है ना। हम्म। देखो इनकम्प्लीट है कॉल, इन्फॉर्मेशन कम है, पोजीशन अवेयरनेस वीक है थोड़ा। ओके। हमेशा पोजीशन पे ध्यान दो, फ्लाइट लेवल डायरेक्शंस, फ्लाइट लेवल डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 वाज परफेक्ट, द ओनली थिंग इज एफआईआर रिपोर्ट ये बोलने के बाद बड़ा डेड एयर दिया आपने। ऐसा लग सकता है एग्जामिनर के आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। अगर आप गलती करोगे और उनको हम्म। लगेगा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, उनके हम्म। ईगो को हर्ट हो सकता है। हम्म। दे विल नॉट टेक इट पर्सनली बट दे माइट जज यू अ लिटिल बिट थिंकिंग के अरे शानी समझते हैं क्या खुद को। तो बेनिफिट ऑफ डाउट शायद ना मिले, अच्छा। बस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके सो हम्म। हाँ, आई डोंट माइंड यू कीप दिस अप। अभी तक कोई एरर बना नहीं है उतना बड़ा कि ऐसा लग सकता है। हम्म। आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस, वी विल नॉट टच इट। रखो ये कॉन्फिडेंस, आप बस एक्यूरेसी बढ़ाओ अपना। ओके। सो यू डोंट चेंज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। यस सर, क्योंकि वो आई फ्लाई 765 आने के बाद ना मुझे हुआ कि बोलना क्या है अभी, ऐसा हो गया, इसीलिए तो डेड एयर केम इन बिटवीन। बट सही बोला आपने, बस नाइन को नाइनर को नाइन बोल दिया। अच्छा। प्लीज ये मिस्टेक मत करो। यस। सोचो एंड बोलो, थिंक एंड स्पीक, लाइफ में जितना जरूरी है उतना हमारे कॉल में भी जरूरी होता। यस सर। हम्म। बाकी अच्छा था, बहुत अच्छा कॉल था, कुछ गड़बड़ नहीं थी, बस नाइन वाली मिस्टेक कर दी आपने। हम्म। मेडल लिया बहुत अच्छा था। हिंट लेना सीखो, आपको लास्ट क्वेश्चन पे रन में दिया है टू वन वन टू। यस यस यस, 1 2। थोड़ा हिंट रखो, अवेयरनेस रखो, बट मिल जाएगा यहाँ हिपोथेटिकल। ऑल्टरिंग हेडिंग नहीं बोलते हैं, टर्निंग राइट बोलते हैं। टर्निंग सी राइट। अनदर एयरक्राफ्ट हेड ऑन, टर्निंग राइट टू अवॉइड कोलिजन, दैट्स इट। ओके। डाउनविंड में कोई दिक्कत नहीं है, बेस लेग पे होते तो दिक्कत होती है क्योंकि राइट में आपको फाइनल्स मिल सकता है। डाउनविंड में इतना दिक्कत नहीं है, ठीक था। आपने बोला कौन सा डाउनविंड, वो मुझे अच्छा लगा, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक था, नॉट बैड। ओके। ये सिंपल कॉल था, अच्छा था, बस रनवे का कनेक्ट रखो आप। हम्म। रीड बैक थोड़ा सही नहीं था, आपको रॉजर मेडे नहीं बोलना था यहाँ पे, ठीक है। ओके। वंस क्लियर ऑफ ट्रैफिक पूरा रीड बैक दे दो। वंस क्लियर ऑफ ट्रैफिक, तुरंत आपने बोला क्लियर ऑफ ट्रैफिक, वो मेरे को लगा थोड़ा। वंस क्लियर ऑफ ट्रैफिक क्लाइम टू 3500 फीट, इंटरसेप्ट रेडियल विल्को, ठीक था। बस यहाँ पे इतना पूरा रीड बैक देते थे ना, और रॉजर मेडे नहीं बोलना यहाँ पे बस आपको। वी डोंट रिप्लाई टू दिस। वो आपको रॉजर दे रहे हैं, उसका रीडबैक नहीं देना है। अच्छा। रीडबैक विल स्टार्ट विद एनी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, क्लियरेंस, अप्रूवल गिवन टू यू एज इट इज। करेक्ट 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 रॉजर मेडे इज जस्ट एक्नॉलेजिंग, इज नॉट गिविंग एन इंफॉर्मेशन। करेक्ट। सो इंस्ट्रक्शन से सीधा स्टार्ट हो रहा, ठीक था ये। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रावो वॉज नॉट पैन पैन, डिसीजन हाइट ऑन फाइनल्स, एनिमल ऑन रनवे, इट्स नॉट अ पैन पैन कॉल। नागपुर टावर, नागपुर ही जा रहे थे आप, राइट। ये आंसर। या नागपुर टावर, आई फ्लाई 7659er, थोड़ा यहाँ पे भी डेड एयर था। प्लीज फ्रेम योर कॉल इन माइंड, ये सारी मिस्टेक्स होंगी ही नहीं। हम्म। अच्छा वो आपने पूछ लिया डीएच का मतलब, मैं बाद में सोच रहा था दे देते क्या जाता, आई वुड हैव गिवन यू फिर हिंट्स भी नहीं आल्सो। समझ में आता शायद तभी। इट्स फाइन, मैं समझा, बट आई डिडंट वांट टू गिव इट टू यू, आई वांटेड टू सी कैसे हैंडल करते हो हाँ आप। हाँ। यू डिड हैंडल इट करेक्टली। अगेन रनवे दिक्कत था बट फाइनल्स बहुत अच्छे गेस किया आपने। सी हम्म। एन एनिमल इनिशिएटिंग मिस अप्रोच, गो अराउंड प्रोसीजर, वेरी गुड। यहाँ पे भी स्पेशल हैंडलिंग डाल सकते थे आप, वही प्रायोरिटी वाली चीज़ है। हम्म। हम्म। सो नो पैन पैन, बाकी इंस्टिंक्ट सही था आपका, गुड जॉब, अच्छा था। सो द ट्रेनिंग है, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग्स, आपकी इंस्टिंक्ट अपने आप डेवलप हो जाती है। बिलीव इन इंस्टिंक्ट, है ना, सही जा रहे हो आपने, लाइक इंटेंट सारे सही ले, आई एम वेरी हैप्पी। फिर भी सुनते वक्त ऐसे लग रहा था कुछ तो मिसिंग है, पता, वो नहीं हम्म। लगना चाहिए बस, should क्योंकि मिस्टेक complete. सारे कॉल्स में लगा कुछ ना कुछ मिसिंग है। Yeah, correct correct. बस शायद वो पीआईसी में खुद को इमेजिन नहीं कर रहे हो आप, शायद इसलिए भी हो सकता है। Yeah, correct. थोड़ा स्ट्रेस आना चाहिए, इतना भी हम जेन मोड में कॉल, आई हम्म। लाइक इट, हम्म। बट
थोड़ा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए, ऐसे लगेगा फिर भगवान प्लेन उड़ा रहा है। तो भगवान को तो लाइक रामायण चल रही है टीवी पे आजकल, सो बस सोचना है और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। Yes, sir. सो इफ गॉड हैड टू फ्लाई, ऐसे कैसे होगा? हम सब बैठे हैं, ऐसे करेंगे, फ्लैश ऑफ लाइट होगा और सीधा डेस्टिनेशन पे मिलेंगे हमें। पीए के भी एक पीए होगा, टेक ऑफ से पहले पीए होगा भक्तजनों, और टेक ऑफ के बाद पीए होगा। Okay. Question number 5. Landed is arrival report. Cabin crew inform loud noise from under the cabin is a brakes hot and tire burst indication. It's a pan call. Pan. But this is arrival report and pan, is it? So pan will take preference. Pan. Nagpur Tower. I fly 7659er. Landed runway 12. So and so time. Brakes hot indication. Suspecting tire burst due loud noise from under cabin. Stopping the aircraft slowly. Request firefighting services and emergency medical services. Passenger on board 180, hospital flight. Landed runway 12, so and so time. Kindly expedite due hospital flight. Okay. सिंपल कॉल है। इसको बस स्ट्रक्चर कैसे करना है, थोड़ा टाइम चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। आपका कॉल बुरा नहीं था, बस पैन यहाँ आना चाहिए था, बिकॉज ब्रेक्स हॉट टायर बर्स्ट। लाउड नॉइज मतलब टायर बर्स्ट हो ही चुका है। लाउड नॉइज नहीं भी होती है, ब्रेक हॉट टेम्परेचर, ब्रेक हीट टेम्परेचर भी हमें टेम्परेचर हाई दिखाता है, तो हमें पैन लेना होता है। लाउड नॉइज आई है मतलब एक टायर बर्स्ट हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको सारे सारे टायर्स का टेम्परेचर नेचुरली कूल होने तक कुछ नहीं कर सकते। टो ट्रक आएगा और आपको लेके जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल फ्लाइट है, शायद वो वहां पे ही डिसएम्बार्क करवा ले हम लोग, बट एयरक्राफ्ट को मूव करना रिस्की है। एक टायर फटा मतलब सारे टायर फट सकता है। तो नाइट्रोजन होता है, इट कैन एस्केप। वहाँ पे गैस टर्बाइन इंजन है, फ्यूल है, देर आर डिफिकल्टीज दैट कैन हैपन। Okay, sir. ठीक है, गो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द सेशन अगेन इफ यू वांट टू नो व्हाट द कॉल इज। फिलहाल के लिए स्ट्रीम हो रहा है तो है अवेलेबल, आई शेयर द लिंक विथ यू। पैन सुनो आप, फिर फ्रेम करना। नागपुर टावर, आई फ्लाई 7659er, लैंडेड रनवे 12, 1130, सस्पेक्टिंग brakes correction, suspecting tire burst due brake hot indication, have heard loud noise from under the cabin, stopping the aircraft slowly on runway 12, passenger on board 180, hospital flight, request firefighting services and emergency medical services, and further instructions on priority due hospital flight, Airbus A320, holding position, runway 12. Okay. Simple. ठीक है? Yes. Any questions? No, sir. Like to take questions. When are you seeing me next? आज कल में possible है? कल? कल तो नहीं. I'm flying back to Abu Dhabi, sir, now. मुझे आज और कल में दो आप एक और कॉल पॉसिबल निकालते हैं टाइम क्विक, 1 hour 25 मिनट्स पे काफ़ी है। फीडबैक फिर तुम्हें रिजल्ट भेज दूंगा, लिखा हुआ चाहिए तो, बट प्रैक्टिस तो कर सकते हो, एंड फीडबैक हम नेक्स्ट 20 मिनट सेशन में ले सकते हैं। Okay, ठीक है sir. I will. कल परसों का बताओ मुझे, परसों शुड बी गुड। I think day after tomorrow हो सकता है परसों, but I will still try before the flight quickly. Stay spontaneous, be on the lookout and try to make it happen. Yes, sir. I will text you. तुम मुझे भेज देना टाइमिंग, 70% आई ट्राई टू बी देयर। तुम डिसाइड कर लो, कुछ नहीं हुआ देन आई मैसेज यू। ओके? Okay, sir. Definitely. एनी क्वेश्चंस? No, sir. Remember what I said and think about the feedback and text me and discuss. Yes, sir. That should be your whole idea. Work on the feedback and work on your areas of improvement. Okay? Yes, sir. Chalo. I'll see you. Good job overall. I'm not giving you marks here, but marks I'll give you on the next class. Okay? Okay, but it was a little better than the previous one, right? Much better, much better. Very happy with your performance. Thank you. But don't settle here. Yes, of course. I don't have to go along. Good job. Keep everything up and work on definitions, abbreviations, thinking and making the calls. 9-9er, Yes, sir. priority. Yes, sir. बस। Okay. ठीक है? Yes, sir. चलो, all the best and text me if you need me. Yes, sir. Thank you. चलो, bye.